Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and a very good morning to you all. Welcome to the Everyday English Expressions course. This is Tuba Akram and you are watching e-learning. Now moving forward, welcome. Every time, बल्कि हर दफा ही thank you के बाद हम सुन रहे होते हैं thank you, welcome. So today I'm gonna give you 5 alternatives for you're welcome as well, जिसको आप welcome कह सकते हैं, you're welcome कह सकते हैं without actually saying you're welcome. Alright, so number 1 alternative phrase for you're welcome is no problem or no worries. Alright, so no worries is basically British one and no problem is a little American. So instead of you're welcome, you can say that no problem, no worries. Number 2 is not at all. Thank you, not at all. Alright. Number 3 is my pleasure. My pleasure, or my pleasure is a bit formal. You can say only pleasure as well. Alright. So someone says thank you to you. So you can say pleasure or my pleasure as well. One more is basically that is anytime. Anytime. Alright. So thank you. You can say that anytime. Fifth one is basically I'm happy to help. Alright. So if your teacher helps you or your student asks a question and you can say I am happy to help instead of you're welcome. Alright. So इन 5 alternatives में से आपको जो बेहतरीन लगा हो, जो पसंद आया हो, उसको comment करके मुझे जरूर बताइए. Alright. Now moving forward about sorry. So sorry is a word which tends to be overused basically. हर बात में जो है हम easily कह रहे होते हैं sorry, sorry, sorry. So आप basically अपनी apology को express कर सकते हैं in 5 alternatives से जो मैं आपको बताऊँ. So here are the example of I am sorry. You can use I didn't mean to hurt you. Instead of sorry, you can say that easily say that I didn't mean to hurt you. मेरा आपको hurt करने का, तकलीफ पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था. I was wrong on my part, and you can say it was my mistake, or you can say it was my fault. You can also say I shouldn't have, or I should never have this. I should never have this one. And lastly, my bad. My bad is basically a casual one. तो आप इसको बहुत बड़ी mistakes में जो है आप my bad नहीं कह सकते. That is a bit casual. So आप कह सकते हैं इसको my bad, I forgot to pick up my water bottle, or I forgot to bring my lunch box today. So in cases में आप इसको use कर सकते हैं. Alright, I hope ये 5 alternatives को जो है alternate phrases को आप use करेंगे अपनी daily routine में. Music licensing reimagined. वो हमें comment करके जरूर बताइए. Now moving forward towards another word, that is tired. Alright, so हम usually इसको बहुत use कर रहे होते हैं. I am too much tired today. I am जिसको आप बार basically आप एक ही word use कर रहे होते हैं, tired. So there are the phrases you can use it instead of tired. Number 1 is I am dead on my feet. Alright. Number 1 is I am dead on my feet. It is basically related to physical fatigue. जब आप बहुत ज़्यादा physically stressed में हो, physically आप काम कर करके थक चुके हो, mothers मेरी जो हैं वो जब पूरे दिन खाना पका के सफाइयाँ करके जो है थक चुकी हो, so she can easily say that I am dead on my feet today. उसके बाद next sentence is I am dog tired. इसको भी जो है हम casually use कर रहे होते हैं, formally इसको use नहीं कर सकते, but casually इसको use कर रहे होते हैं. I am dog tired when you are so much tired. Number 3 is when I am drained out. I am
drained out. It is related to mental stress, mental fatigue. जब आप पढ़ के जब आपके एग्जाम्स हो रहे होते हैं, पढ़ के आप थक चुके हैं, काफ़ी सारी बुक्स नोट्स, तो फिर आप इसको कह सकते हैं oh my god today I'm drained out. इसके अलावा आप यूज़ कर सकते हैं tired. I am exhausted. So here are the four alternatives Music for tired. licensing reimagined. Alright, I hope अब आप जो है tired की जगह ये 4 sentences यूज करेंगे और इनमें से जो भी आपको पसंद आया है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा. Next common phrase and common expression is basically I am happy. हम जो है बार बार कह रहे होते हैं she is happy today, he is happy today, I am happy today, you seem happy today. ये इस तरह के वर्ड्स हैं जो हम डेली रूटीन में यूज कर रहे होते हैं. सो इंस्टेड ऑफ हैप्पी हम उसको जो है किस तरह, here are the alternate phrases basically जिसको आप यूज कर सकते हैं. सो for the happy you can use blissful. I am blissful today. So that is a basically Music licensing cool and calm reimagined. वाला happy. Cool and calm जो recent personalities होती हैं they can basically use it. I am blissful today. I am इसके अलावा आप कह सकते हैं happy को express करने के लिए thrilled on bits. Thrilled on bits. ये ऐसा सेंटेंस है that is the bigger happy जब आप जरूरत से ज़्यादा खुश हो basically. So thrilled on bits. Artlist Alright? IO. इसके अलावा आप कह सकते हैं ecstatic. I am ecstatic today. Ecstatic is basically a mood जिसको आप कह सकते हैं कि my result is announced and I got admission in the university. I am too much ecstatic today. Due to Music licensing इसके अलावा और भी कोई reimagined. चीज़ हो सकती है. Today I got 100 out of 100 marks in the test, so today I am too much ecstatic. Alright? So इसके अलावा आप कह सकते हैं to express your happiness. I am you can say jubilant. Jubilant is basically undertone of celebration. Celebration जब आप जो है jubilant को कह सकते हैं, इसको आप express इस तरह से कर सकते हैं in a scenario where you are too much, you are throwing a party, you are basically throwing your birthday party or anything in a sense of party or fun. So इस word को आप वहाँ पर use कर सकते हैं. Next is joyous. So I am Music joyous licensing today. reimagined. So these are the words, 5 different words जो कि आप different scenarios में happy feeling को express करने के लिए use कर सकते हैं. So I hope कि आप जो है अब इन 5 alternate phrases को use करेंगे और इनमें से जो भी आपको सबसे बेस्ट लगा है उसको हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा. Thank you so much for today's lecture. I hope कि जो है अब आप चीज़ें को बेहतर तरीके से जो है आप इसको इस्तेमाल कर सकेंगे. कमेंट के जरिए ज़रूर बताइए. पूरी कोशिश होगी मेरी और मेरी टीम की कि मैं उस पर भी वीडियो बना सकूँ. Thank you so much. अल्लाह हाफ़िज़.